Hello friends and my dear students. Today we will discuss a new chapter of class 7, that is chapter 1, matter and its composition. So this is chemistry. Subject is chemistry in science. So in your previous classes, that is in class 4 or 5, you have studied about matter. So here nothing more, it is just an introduction. All right. So what is matter? Simply here few picturization is given. Okay. So in this we are seeing that one wooden chair is there, glass, milk inside the milk in the glass, and a balloon. Three different state. This means liquid, the solid, and this gaseous state. So all the object which has mass and it occupies space is called matter. So we will know more about matter. Today we will study this chapter, that is matter and its composition. I have so many objects I have kept here. So it has this all are come under solid, and this okay, good night liquid, this is a liquid. Okay, all the price details are given. So this come in liquid state. Okay, after providing heat, we joint in a circuit and in a socket, in that socket, and it release the vapor that comes with the help of this hole. So that is release that comes in a gaseous state. So this all are matter because it's occupying space. So let's study today. We'll know more about matter. We see different kinds of objects around us. Out of all the objects, few objects are natural and few objects are man-made. In class 2 EVS also you might have been a study about living and non-living things. Okay, there are few things which are made by man, like all these things, like all these objects which is kept over here. These all are man-made, non-living things. But there are few things like human beings, plants, trees, birds, all natural. Okay, so these all are the things which have life. They are called living things. Okay. So these examples are given here. Next, matter and its expansion. Okay, same definition. In a science, this is beneficial, and actually science static. Few things which you remember in class 4. That is why I used to tell that remember now, forever this will be as it is. So that is the benefit of science, advantage of science, that one definition I will remember in class 4. Same it will be follows as a class 7, 6, 5. Okay. So same definition which you have learned. Anything that has mass and occupies space is called matter. Two characteristics of matter are as follows. First one, matter has mass. You know that. Look at here, two ball. One this metallic, another is the cotton one. If the weight is equal, means 1 kg, 1 kg, then this balance will be in a same equal position. Okay, but this ball, this iron ball has more mass. That is why it is heavier and it is bent towards downwards. Okay, so it is necessary that an object occupy more space has more mass. A large ball of a cotton occupies more space than a small ball of iron. But a small ball of iron has more mass. Then it is clear that an iron ball, being smaller in size, has more mass than a large cotton ball. Here it is telling about, but a small ball of iron has more mass because its density is more. It is more denser. The molecule of this ball is more denser, and that is why it's very its density is more and it's very solid. It's solid and heavy in weight. So in a different term you will understand these things. Next, here are a few demonstration it is given, and in class 4 and 5 we have studied that about this balloon. One is inflated balloon and second was a pricked one. So which will be heavier? The balloon which is filled with the air. Very similarly, all this you can do at home. One filled with one empty glass, another is filled with water. So this will obviously this will be heavier. ये भारी रहेगा.
Now matter occupies space. Next characteristic we will study how matter occupies space. Space depends on the size of the object. This is the size of the object. An object with bigger size occupy more space. जो जिसकी साइज़ अधिक है अपने क्लास में ही देख लेंगे या अपने बैग को ही देखेंगे. आपका स्टोमन बॉक्स जिसकी साइज़ छोटी है, ओके, जिसकी साइज़ छोटी है वह कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन जिसकी साइज़ बड़ी है अभी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना. ओके, आप अपने बैग और अपने स्टोमन बॉक्स और पेंसिल से कंपेयर कर सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल से बहुत इजीली क्लियर हो जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, डू यू नो साउंड, हीट, लाइट, ETC डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ये सारे क्या करते हैं, कोई स्थान ही नहीं घेरता. इट डजंट ऑक्यूपाई स्पेस. सो व्हाट इज दिस? They do not have any mass, so they are not matter. So they are not a matter. Feelings, emotion also do not define matter because they don't have any mass. Television sets and mobiles are matter, but the signals they receive are not matter. जो सिग्नल वे रिसीव करते, जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं, नेटवर्क 4G 5G 6G नेटवर्क्स, ये सारे मैटर नहीं है क्योंकि वे कोई स्पेस ऑक्यूपाई ही नहीं करते, कोई स्थान ही नहीं घेरता, वे मैटर में नहीं आएंगे. ठीक है. लेकिन टेलीविज़न का जो सेट है, मोबाइल है, ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. दैट इज़ वाई दिस विल कम अंडर मैटर. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ मैटर. Only this topic is new for you, so let us study composition of matter. मीन्स ये जो मैटर है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के कंपोजिशन क्या है. ठीक है. We have to study this. As all substances are made up of matter, we know that matter is made up of extremely minute. Minute means tiny, means very 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 small, very fine particles. These tiny particles are atom. और इन सब छोटे पार्टिकल्स जो हैं, टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम. Thus we can define an atom as the smallest particle of a matter that show all the properties of the matter. हम लोग इसका easy definition क्या याद करेंगे कि atom is the smallest particle of matter that shows all the properties of matter. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस प्लास्टिक बॉल को, अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटेगा और इसके जो एटम होंगे, छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे, उसमें वो सारी प्रॉपर्टी, सारे गुण पाए जाएंगे जो इसमें हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट, एटम्स डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. एटम हमेशा फ्री मतलब हमारी तरफ या एयर के पार्टिकल्स की तरफ फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो दे रिएक्ट विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. दैट इज़ वाई एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट करते हैं. हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं, अकेले नहीं रह सकते हैं, उनको भी दोस्त की ज़रूरत है. इसीलिए वे दोस्त फाइंड आउट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को फाइंड आउट करते हैं और दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप कर लेते हैं. और जो फ्रेंडशिप करके वे लोग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. समझ में आ गया. On the other hand, the smallest particle of matter, compounds that exist in free state and shows all the its properties called molecules. और दूसरे भाषा में हम लोग दूसरे शब्दों में बोले तो क्या है कि ये भी टाइनी पार्टिकल्स है, लेकिन दो एटम्स के मिलने से बना है और ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स हैं. इसमें भी वे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस मैटर में पाया जा रहा है. ऑलराइट. नेक्स्ट, ऑल्दो मॉलिक्यूल्स आर लार्जर दैन एटम, दे आर सो टाइनी एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हम जानते हैं कि ये क्या है, एटम से बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देते. नेकेड आई मीन्स बिना किसी लेंस के. ओके, हमारा जो नॉर्मल आई है वैसे नहीं, अगर जब तक हम लेंस का इस्तेमाल नहीं करें तब तक वो दिखाई नहीं देगा. दैट इज़ वाई आप बता रहे. 2 or more atoms सेम और डिफरेंट आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो एटम, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन मीन्स जो एटम्स हैं वे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हमेशा, तो क्या करते, वे दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स दूसरे एटम के साथ जाके फ्रेंडशिप करते हैं. जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर ली है, क्लोरीन एटम के साथ फ्रेंडशिप कर ली है, हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप कर ली और एक साथ ये रह रहे हैं. व्हेन दे आर
existing together, this is in a free state and this called molecules. All right, you can see easily now. And here molecules are here atoms are far away, and here you can see they are attached together. Can you see easily? Okay, now you have to fill in this blank, okay, and comment all these in my comment box. Those who are new, kindly like, subscribe and share this channel. For me you can do these things ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और इस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिसको इनकी ज़रूरत है, जिनको एक्चुअली में साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, मैं जिन्हें चाहिए हेल्प. यू जस्ट हेल्प ईच अदर एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. मैटर ऑक्यूपाई डैश एन आयरन बॉल being smaller in size has more dash than the large cotton ball. Matter is made up of tiny particles called this. Two or more atoms are bonded together to form this. Just now we have studied. Dash do not exist in a free state. Answer this all the questions in comment box given below. Next, this one we have studied in standard 6, but still we will complete. Characteristic of a molecules means particles of a matter. What are the basic characteristic? Based on arrangement of the molecules. इनका arrangement, okay? How they are arranged. This called arrangement, okay? Based on the arrangement of the molecules of a matter, characteristic of a molecules of a matter are as follow. उसके characteristic है, ठीक है? उसके arrangement, वो कैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं, कैसे उनका arrangement में एक दूसरे से कैसे उसको सजा के रखा गया क्लू, ठीक है? The space between the molecules or a particles of matter is called molecular space. मैंने पढ़ा चुका है, we know that. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उनको हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस. और इनके बीच में ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, आपस में जो फोर्स लग रहा है, जो उनको टाइटली पैक किया रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटर मीन्स इनसाइड, मोलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में. दैट इज वाई दिस वर्ड कम इंटरमोलिक्यूलर. ओके, इंटरमोलिक्यूलर, इंटर मीन्स इनसाइड, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच. इंटरमोलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बल, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्थान, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. आई थिंक दिस थिंग्स यू माइट हैव इन अंडरस्टैंड. द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन. मीन्स ए जो मॉलिक्यूल्स के जो मैटर रैंडम मोशन मीन्स घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ. आपने गाना सुना ही होगा, इधर चला मैं उधर चला, ठीक है, जाने कहाँ मैं किधर चला, लाइक जस्ट लाइक दैट. ये मॉलिक्यूल्स कभी इधर जाते हैं, फिर उधर टकराएंगे, फिर उधर जाएंगे, उधर टकराएंगे और कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, कोलाइड करेंगे. केमिस्ट्री लैंग्वेज कोलाइड. ओके, स्टेट्स ऑफ अ मैटर ये हम लोगों ने वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लासेस, सो नथिंग मोर टू एक्सप्लेन इन दिस, बट दिस टेबल यू रिमेंबर. Properties, this all the properties are given: solid, liquid and gases. Shape, definite shape, not definite and indefinite. इसमें कोई शेप ही नहीं रहता है. वॉल्यूम इसका डिफिनिट होता है. 5 kg मीन्स 5 kg, ओके. 5 liter मीन्स 5 liter. No indefinite means here no definite shape, means it is indefinite. Attraction between the molecules very strong. Attraction between these molecules is very very strong, okay. Note strong. For example, if I talk about this water bottle, so I can easily press and liquid. About this bottle I am talking. Liquids cannot be pressed, but still we can say this has a note very strong. The attraction between the molecules are not very strong. That is why it can flow here to there, okay. I am pressing this one because there is a gap, that is why I am able to press, otherwise liquid cannot be compressed, okay. Negligible. Space between the molecules, negligible means बिल्कुल नहीं. Moderate में थोड़ा बहुत रहता है. Large, बहुत ज़्यादा space, large space it has. Position of a molecules fixed. Once it is kept here, it will be permanently kept here, okay. Next, not fixed, move around freely. When you are burning a incense stick, so the fume of this will spread whole inside your room.
flow, cannot flow, solids cannot, but liquid, just now I have explained, it flow from higher to the lower. That is why tank, water टंकी, okay, water tank is fit in your top, छत में सबसे ऊपर में वाटर टंकी फिट किया जाता है, ताकि मोटर से जब हमको एनर्जी लगा के पानी ऊपर सप्लाई करते हैं, और सप्लाई के बाद वो आसानी से बिना मोटर ऑन किए ऊपर से आप नल को टैप ओपन करोगे, व्हेन यू ओपन द टैप, और हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट में ईजिली फ्लो कर लेगा. दैट इज इट इज लिखन कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट. इसीलिए जो पानी की टंकियाँ हमेशा छत के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि वहाँ से पानी आसानी से नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक पहुँच जा सके. कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. रिजिडिटी मीन्स हार्ड, वेरी हार्ड, रिजिड, लेस रिजिड, नॉट रिजिड. कंप्रेसिबिलिटी, कैनोट बी कंप्रेस्ड ईजिली, कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट. मैंने बोला ना कि बहुत कम ये में एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में, ज़्यादा हम लोग लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. हाईली कंप्रेसिबल, CNG एंड ऑल हाईली वी कैन कंप्रेस. गुड. इफ यू हैव एनी डाउट, comment me in a comment box, okay? Like, subscribe the channel and share with your friends.